gospel analysis. So today we have got a bunch of topics to discuss. So we'll discuss these topics in details over here in this analysis. But before that, I just want to announce you a simple affair that to get all our notifications of our upcoming courses, offers and programs, and also to get our free study materials, you all are requested to join our free WhatsApp group that is directly in the link given below. Okay, so please do join it to get some of the latest update associated with our preparation for civil services. So now let's start with today's analysis. The first topic says about SC status of Dalits. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट एक कंट्रोवर्सी चल रहा है, ठीक है, दलित्स को लेके. So the union government has now formed a 3-member commission to examine the issue of whether scheduled caste status can be accorded to Dalits who have over the years converted to religions other than Sikkim or Buddhism. तो आज हम लोग जो दलित्स बोलते हैं, ठीक है, जो आज हम लोग का जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे किस किस को दिया जाता है? हिंदुइज्म को दिया जाता है, सिखिज्म को दिया जाता है और बुद्धिज्म को दिया जाता है. तो अभी जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, मुसलमान हो गए, तो उन लोगों के लिए देयर इज नो एससी स्टेटस दो दे आर कंसिडर्ड अमंग्स द दलित्स. So now this commission, which has been formed, a 3-member commission, this will look into some of the changes on the scheduled caste person, which goes through after converting to another religion and its implications on the question of including them as an SC. And this will include examining what? Their respective traditions. उनका traditions जो उनका एक अवभाव है वो सब जाना जाएगा, पहचाना जाएगा. उनका customs जो follow करते हैं वो लोग वो जाना जाएगा. Social and other forms of discrimination की वो society में किस forms of discrimination उन लोग face करते हैं. And however, these things would be very much essential when a person is directly moving in from one religion to the other, that is during the time of the commission. So ये form किया गया है former Chief Justice of India, Justice K.G. Balakrishnan Sahab. Okay, so this Justice K.G. Balakrishnan Sahab will directly go for the examining the accordance of such number of scheduled caste status to these people who have converted to other religions other than Hinduism, Sikhism और Buddhism. Okay, and इनका deadlines कितना दिया गया है? Deadlines 2 साल का दिया गया है, 2 years of deadlines. ओके तो इसीलिए दिस वेरी कमिटी इज डायरेक्टली न्यूज. तो ये कमिटी बहुत ज्यादा न्यूज में है. ये इशू जो किया था मैंने ये बहुत अच्छी तरह अपना पास्ट एनालिसिस के वीडियोस में मैंने संभाला था, मैंने दिखाया था कि कैसे ये फॉर्मरीज किस इश्यूज के लिए ये सब फॉर्म हो गया था. ठीक है, सो देयरफॉर यू शुड डायरेक्टली गो बैक थ्रू दिस एनालिसिस वेयर आई हैव डिस्कस्ड इन डेप्थ अबाउट द situations about why the people or why the other communities are not given the due status of this Dalits. Okay, so therefore यहाँ पे बस मैं ये एक तर्क रखना चाहता हूँ कि like why today still today center does not provide the scheduled caste status after all religions conversion. ये 3 कारणों के लिए होता है. ठीक है, आज शेड्यूल कास्ट का स्टेटस इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है? देखो, फर्स्ट रीजन है द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस रिपोर्ट्स एज एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस सोशल डिसेबिलिटीज ड्यू टू कास्ट आइडेंटिटी एंड नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एविडेंस in support of all the reports that is directly coming in from the other communities. Okay, Dalit Buddhists cannot be compared to Dalits who converted to Islam or Christianity because in case of the former, conversions were voluntary, and in case of the later, the conversions might have taken place on account of other factors. तो इसी के लिए भी ये सेंटर ने डायरेक्टली एक्सप्लोर नहीं किया गया था. Also, the Dalits who converted to Islam or Christianity ameliorated their social status by the way of their conversion and cannot claim to backward since untouchability is a feature of Hindu religion and its branches alone. तो ये 3 कारणों से we could see that center does not provide the status of SC to all the religious communities or all the religious people who have converted from one religion to either some of the other religions like Islam or Christianity. ठीक है, तो ये कमीशन जो हैंगिंग क्वेश्चंस है कि वेयर डज द लॉ से नाउ, हाउ हैज सुक्सन इंक्लूडेड सेंटर्स आर्गुमेंट, तो ये अच्छे से थोड़ा देख लेना. ये कमेटी बहुत ज्यादा न्यूज में है. प्रीलिम्स में डायरेक्टली इसका ये आ जाएगा कि व्हाई वी कुड सी दैट दिस committee is directly news and which is the committee which is directly inquiring about the
कंडीशन ऑफ पोजिंग द SC स्टेटस फॉर दलित पोस्ट कन्वर्सन्स। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो देख लेना ये। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ह्यूमन राइट्स टू विगर्स ऑन जिंजियांग। देखो, इन द रिसेंट टाइम्स वी कुड सी दैट इंडिया ने रिसेंटली क्या किया था। Recently, India decided to abstain from a resolution on the concerned at Human Rights Commission related to the rights of the people of China's Xinjiang regions, which was in line with the practice of non-voting on country-specific resolutions. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया था, एब्सटेन किया था, एक UNHRC में एक रेजोल्यूशन लेके आया था। And this resolution was obviously led by whom? It comprises, that is a draft resolution was pushed by, or it comprises of countries like Canada, Denmark, Finland, UK, US, Iceland, Norway, Sweden, and other co-sponsored countries by this wings. So this vote ultimately went in favor of China, because if you say about the UNHRC में आज कितना members है? 19 members है. Okay, so you could see that, sorry, I'm not telling the 19 members. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, UNHRC में 19 members of the UNHRC opposed the resolution, and 11 members, including India, Malaysia, Ukraine, abstained the vote. So this resolution was supported by the parties who brought on this resolution, and it is for the very first time that India clearly called for respecting the human rights of the people of Xinjiang Uyghur Autonomous Regions. तो यहाँ पे पहली बार, बिकॉज आज तक हम लोग ने कभी भी वी हैव नेवर सेड अगेंस्ट चाइनास एग्रेशन, तो आज हम लोग ने खुले में डायरेक्टली कहां गए, UNHRC में गए, और वहां पे खुले में चाइना को बोला, चाइना को एक वार्निंग सेंड किया कि यू हैव टू रेस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ दिस पीपल लिविंग इन योर प्रोविंस ऑफ जिंजियांग व्हिच आर नोन एज द उइगर्स। तो अगर मैं थोड़ा बहुत उइगर्स के बारे में बोलूं, तो मैं हमेशा बोलता ही रहता हूं, फिर भी मैं थोड़ा बोल देता हूं कि लाइक उइगर्स आर होम, दे आर मोस्टली मुस्लिम्स दैट लिव्स इन चाइनाज रीजन ऑफ जिंजियांग। ओके, और ये इनका क्या नाम है, इसको बोलते हैं XUAR मतलब क्या, जिंजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन, एंड इट हैज गॉट अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 12 मिलियन। ओके, एंड द उइगर्स कंस्टिट्यूट अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस रीजन। और इनका लैंग्वेज क्या है पता है, इनका लैंग्वेज बहुत सिमिलर है टर्किश, and they consider themselves not a part of East Asia, they consider themselves to be a part of the Central Asian nations. So today we could see that from the last few years, the Han Chinese, that is the countries at main majority, they directly migrate to Xinjiang in large number just to make the population of Uyghurs very much of lesser. तो आज मैं बोलूं कि पहले यहाँ पे हन चाइनीज था ही नहीं, पहले 75% ऑफ दिस रीजन इज डायरेक्टली ऑक्युपाइड बाय द Uyghurs only. Today you could see that from the region decades ago it increased around 42% now. तो आप सोच सकते हो कि व्हाट इज दिस जिंजियांग, और ये जिंजियांग चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू से, or probably you may know all these things, that Xinjiang is technically an autonomous region within China, and its largest region, rich in minerals, sharing borders with 8 countries, including India, Pakistan, Russia, and Afghanistan. सोच सकते हो, तो चाइना यहाँ पे क्यों इंटरेस्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स कंटेंट्स, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, just because of the mass migration of the Han Chinese. So today we could see that they are directly in some of the this camps. Also, there is some type of policy approach by China about shoot to kill. Okay, then genocides हो रहे हैं वहां पे. Then we could see that mass sterilizing of Uyghur women to control their respective population. Forced labor हो रहा है यहाँ पे. Allegations of terrorism है यहाँ पे. So therefore today we could see that यहाँ पे पहली बार after abstaining a vote, क्योंकि हम लोग कंट्री स्पेसिफिक वोट नहीं करते, हम लोग किसी एक कंट्री को, आज चाहे मान लो अगर रशिया को भी किसी ने टारगेट कर रहा है, तो हम लोग वहां पे भी एब्सटेन कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में हम लोग कुछ ध्यान नहीं देते। हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबली अगर उसका कुछ प्रॉब्लम है, टेररिज्म ग्लोबली प्रॉब्लम, उसके ऊपर बात करो, क्लाइमेट चेंज हाँ उसके ऊपर बात करो, तब हम लोग वोट देंगे। लेकिन हम लोग एक कंट्री के अगेंस्ट में कभी वोट नहीं करेंगे। तो इसीलिए स्पेसिफिक टू एनी कंट्री यहाँ पे हम लोग ने एब्सटेन कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज में है ये। तो ये अभी फर्स्ट टाइम इंडिया ने यहाँ पे अपील किया है
in this UNHRC about the protection of the human rights of this Uyghur Muslims. ठीक है, तो अभी देखते हैं चाइना का रिप्लाई यहाँ पे क्या आता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आएंगे. इंडियन प्रिजनर्स डाइड इन पाकिस्तान. तो अभी यहाँ पे 6 prisoners who completed their jail terms died in Pakistan in the last 9 months. लेकिन ये जो 6 prisoners थे ये ऑलरेडी वहां पे टर्म खत्म कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन लोग का मसला है, पता ही है ये कंट्री. ओके, दैट इज आवर वेरी नेबरिंग कंट्री दैट इज नोन एज पाकिस्तान. उन लोग का हालत पता ही है. तो इंडिया का कोई भी हो तो वो लोग छोड़ते ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे अभी इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पे जो इनका दुश्मनी है ना, ये दुश्मनी सिविलियंस को चुकाना पड़ता है कभी कभी. Even you can see these fishermen, okay, who went on in collection of these fishes. Today we could see that according to the Gujarat government के बारे में अगर बोलो, a total of 345 fishermen from the state were lodged in Pakistani jails as of December 2020. दिसंबर 2020 तक यहाँ पे, चलो ठीक से अच्छे से लिख देता हूँ, दिसंबर 2020 तक यहाँ पे आज तक के लिए 345 इंडियन फिशरमैन वहां पे बंद है. एंड therefore we could see that यहाँ पे Pakistani forces also opened various number of fires with these boats and various number of persons directly got missing. So Pakistan has aggressively sponsored violence in India, and therefore we could see that even the 2008 Mumbai attacks has been done through these fishing boats only. So therefore you could see that today, though हम लोग का यहाँ पे एक national framework है, okay, which directly says about that there should be a proper coordination between the two countries, लेकिन वो पाकिस्तान मानता नहीं है. So Pakistani maritime security agencies, they directly goes into a conflict with our fishermen, and therefore reportedly both the countries have directly lost. हम लोग का इंडिया का ज्यादा लॉस होता है. हम लोग का जो नेवीज है, हम लोग का जो कोस्ट गार्ड है, वो डायरेक्टली ओपन फायर नहीं करते, और हम लोग रिपाट्रिएशन में बिलीव रखते हैं, लेकिन उन लोग का कुछ रिपाट्रिएशन का बात ही नहीं है. दो दे हैव कंप्लीटेड देयर सेंटेंसेस, तो वहां पे लॉ जरूर है, लेकिन वो लॉ इज टोटली अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज ओवर देयर. सब गवर्नमेंट के ऊपर बात, गवर्नमेंट मतलब क्या, आर्मी के ऊपर बात है. ठीक है, तो यहाँ पे उसी के लिए ये वाला न्यूज में है. ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं. स्टबल बर्निंग इज 3 years low. मतलब स्टबल बर्निंग, we all know about the problems that is happening in this area of the northwestern province of India, पंजाब हरियाणा. ठीक है, तो स्टबल बर्निंग मैंने क्या बोला था, इट इज एन एक्ट ऑफ सेटिंग अप फायर टू क्रॉप रेसिड्यू टू रिमूव देम फ्रॉम द फील्ड टू सो द नेक्स्ट क्रॉप. ठीक है, तो यहाँ पे हरियाणा और पंजाब में ये बहुत ज्यादा एक एक्सरसाइज है which was very much of an important exercise done by the farmers after the kharif season goes on. Okay, तो यहाँ पे अभी रबी सीजन शुरू होने वाला है. तो यहाँ पे इन लोग का मानना है कि लाइक दिस बर्निंग इज डायरेक्टली द चीपेस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू गेट रीड ऑफ दिस स्टबल. एंड पैरेलली यू कैन सी पेस्ट एंड टर्माइट्स आल्सो गेट्स किल्ड आउट ऑफ दिस स्टबल बर्निंग्स. ठीक है, तो ये कब शुरू होता है, अभी शुरू होने का टाइम है, और ये पीक कब होता है, नवंबर में. ओके, डायरेक्टली कोइंसाइडिंग विद द विथड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज द रिट्रीटिंग मानसून. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग का बहुत ज्यादा, अभी यहाँ पे रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बोला गया है कि ये 3 year लो है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ओनली 320 फायर्स हैव बीन रिपोर्टेड इन दिस ईयर एज अपोज्ड टू 620 एंड 1935 इन 2021 एंड 2020 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो 2020 में देख सकते हो 1935, फिर 2021 में वी कुड सी 620, तो 2022 में वी हैव सीन अबाउट 320. तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली कम हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कुड सी इवन देयर विल बी नो smog or there will be no such type of fog which we could see in the roads which leads to accidents, because ये जो अभी westerlies blow करेंगे from the Mediterranean Sea, ये सारे धुआं को लेके कहाँ पे ट्रैप कर देंगे, दिल्ली में. एंड therefore we could see दिल्ली, नॉर्दर्न यूपी, ये सब एरियाज में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होता है विंटर के टाइम में, बिकॉज ये आके ट्रैप हो जाता है यहाँ पे. तो स्मोक व्हेन इट डायरेक्टली मिक्स विद द फॉग, इट रिजल्ट्स इन सम टाइप ऑफ हार्डर स्मोक पार्टिकल्स. ठीक है, तो अभी ये बहुत ज्यादा रिड्यूस में, एंड ये अच्छी खबर है, बिकॉज गवर्नमेंट इज डायरेक्टली वर्किंग मोर एंड मोर सो एज टू टैकल सच नंबर ऑफ थिंग्स विच मे हैम्पर द क्लाइमेट एज वेल एज मे लीड्स टू लॉस ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमैनिटेरियंस एक्सेस. ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. इंडिया भूटान फ्रेंडशिप पार्क, तो ये बोल रहा है अबाउट द रायमोना नेशनल पार्क. ओके, जो अभी अभी रिसेंटली अभी हम लोग देखे थे अबाउट रायमोना नेशनल पार्क.
Okay, so it directly was the national park in western Assam, Kokrajhar district. तो यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये रायमोना है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज डायरेक्ट द रायमोना पार्क. तो ये कहाँ पे है? असम के वेस्टर्न पार्ट में, इन द कोकराझार डिस्ट्रिक्ट. ओके, एंड यहाँ पे it has boosted the protection of the greater Manas landscape besides fulfilling also the recommendation of the UNESCO's World Heritage Site Committee. तो ये ग्रेटर मानस का एक पार्ट है, बिकॉज मानस डायरेक्टली कहाँ से फ्लो होता है? It's come from Bhutan. So today we could see that this Assam government recently even notified, okay, that this Raimona and this Dehing Patkai will be the national parks, which makes the country states national parks to 7. The others being Kaziranga, Manas, Nameri, Orang, and Dibru Saika. तो ये जो रायमोना नेशनल पार्क है, ओके, ये रायमोना नेशनल पार्क एग्जैक्टली इफ आई से अबाउट, इट इज लोकेटेड इन गोसाईगांव सब डिविजन ऑफ कोकराझार. ठीक है, एंड वी कुड सी दैट दिस बाउंड्री ऑफ रायमोना नेशनल पार्क is directly forming with the Sankosh River on the west along the interstate boundary of West Bengal and Assam. Okay, so Kaziranga and Manas were declared as World Heritage Site in 1985. Okay, but we could see that Manas slipped because of extremism, which links to poaching and felling of trees before getting back on track a few years ago. So Raimana National Park is of huge conservation significance, strengthening the greater Manas landscape. ओके, तो यहाँ पे और एक मैं बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोग रायमोना देख सकते हो, ये तो ये हम लोग का बाउंड्री है यहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल के साथ. तो वेस्ट बंगाल के यहाँ पे एक रिजर्व है विच इज नोन एज द बक्सा टाइगर रिजर्व, BUXA. ओके, एंड वी कुड सी वन अनदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, not one another, it's two wildlife sanctuary actually. One is the Phipsu wildlife sanctuary and the other is the Namgyal Wangchuk wildlife sanctuary. ठीक है, तो ये यहाँ पे एक ग्रेटर मानस, ये पूरा एरिया बस वाइल्ड लाइफ या ऑल सच नंबर ऑफ फॉरेस्टेड एरिया से भरे हुए हैं. ठीक है, तो देयरफॉर वी कुड सी दैट यहाँ पे अगर रायमोना भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाए तो ये डायरेक्टली हम लोग का यहाँ पे 3000 स्क्वायर किलोमीटर का एक ग्रेटर मानस लैंडस्केप बन जाएगा. ओके, तो यहाँ पे इसीलिए इंडिया एंड भूटान हैव एन अरेंजमेंट फॉर ट्रांसबाउंडरी कंजर्वेशन ऑफ मानस, whose Bhutan part is called the Royal Manas National Park and it covers around 1000 square kilometer. तो यहाँ पे आज हम लोग क्या क्या एक फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है. टुडे यू कैन सी दैट दिस नेशनल पार्क is rich in biodiversity with 11 different forest types. Also, the national park has a sizable population of golden langur, elephant, tigers, clouded leopards, wild buffaloes, and also about 150 species of butterflies, 170 species of birds. लेकिन रायमोना प्रिसाइजली अगर बोला जाए तो किसके लिए फेमस है? गोल्डन लंगूर, which is an endemic species which has been named as the mascot of even the Boroland region. तो बोरोलैंड रीजन का एक मास्कॉट क्या है? ये गोल्डन लंगूर है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी बोला गया है कि लाइक दिस इंडिया भूटान टू गेट फर्स्ट ट्रांसबॉर्डर फ्रेंडशिप पार्क सून. तो ये डायरेक्टली बहुत जल्दी ओपन अप होने जा रहा है. ठीक है, तो ये हम लोग का सिक्स्थ पार्क बन जाता है. चलो ठीक है, लेट्स कम टू द लास्ट वन, दैट इज द एडिटोरियल पार्ट, द एट्रोफी ऑफ न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. तो यहाँ पे मेनली इट फोकस्ड अबाउट द न्यू बुद्धिज्म. ओके, और जो हम लोग बोलते हैं कि लाइक वी हैव गॉट वेरियस सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बेस फॉर न्यू बुद्धिज्म है, वी कुड सी दैट दिस एडवांसमेंट ऑफ हिंदुत्व offers residual space to some of the symbols of Buddhism and downplays its revolutionary potential. ठीक है, तो therefore this things which is known as new Buddhism. देखो थोड़ा हिस्ट्री के में चलते हैं. यहाँ पे हिस्ट्री में क्या बोला गया है कि लाइक टिल October 14, 1956 the followers of Buddhism in India were an insignificant mass, बहुत कम तादाद पे थे. And as a religion it was one of that was on the verge of extinction, खत्म होने के तादाद पे थे वो. मैं 1956 के बारे में बोल रहा हूँ. ठीक है, on this very date, that is October 14, 1956, we could see that Ambedkar embraced Buddhism and in a grand ceremony at Nagpur, Maharashtra, offered it to millions of his followers. ठीक है, and significant sections among the erstwhile untouchable caste divorced the degraded untouchable caste, identified to find solace in the teachings of Buddha. And by the time of October 20, 2021, यहाँ पे एक असर होता है किसके लिए? Because Prime Minister inaugurates the Kushinagar International Airport in Uttar Pradesh,
which will help connect important Buddhist pilgrimage sites. And Kushinagar is also an important Buddhist pilgrimage destination. So today, if I wants to go from, or if I wants to see about the social perspective of this neo Buddhist, यहाँ पे देख सकते हो कि like with the conventional Hindu social order, the untouchables were very much reduced to a subhuman category and were treated with hatred and subjected to prejudices. Though they were impactful social reforms to correct historical wrongs, the general social psyche, मतलब जो general tendency था, वो very dominant था किसके ऊपर? इस दलित्स के ऊपर और इन lower caste के ऊपर. It was with the time of arrival of Ambedkar in the national political stage, the Dalits realized that their self potential and launched a struggle which claims an equitable share in the modern institutions of power. And embracing Buddhism is heralded as an intellectual choice of the Dalits that connects them to a robust historical past, also makes them to enjoy some of the constitutional rights as secular citizens. So इसीलिए यहाँ पे we could see that बहुत ज्यादा एक पावरफुल दलित मूवमेंट शुरू हुआ था मुंबई में, औरंगाबाद में, नागपुर में. You can consider in this Nagpur the Diksha Bhumi, okay, the place where Ambedkar embraced Buddhism. Okay, then we could see about that the Buddhism post Ambedkar period, which slowly and slowly went on from this middle elites towards the higher elites also. So अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि like अभी तो यहाँ पे न्यू बुद्धिस्ट और मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट जो है उनके ऊपर भी बहुत सारा एक कंटेस्ट में आ गए ये लोग कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है. तो यहाँ पे ये कंटेस्ट चलता ही रहेगा. बट टुडे वी कुड सी that this neo Buddhist is very much essential or very much is an essential element for the Dalits or for the people who are directly from the downtrodden society. तो इसीलिए ये पहली बार वी कुड सी दैट अभी जो न्यू बुद्धिस्ट का जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी बहुत लार्ज स्केल ये स्प्रेड हो रहा है. ठीक है. सो दिस बिकॉज दिस इज वेरी मच ऑफ लिबरलाइजेशन इन नेचर, ये बहुत लिबरल है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे बोल सकते हो कि न्यू emerges maverick phenomena that offers strong psychological solace to struggling Dalit masses. And a large majority of Indian Buddhists reside in Maharashtra just because of this movement created by B.R. Ambedkar साहब. ठीक है. तो ये दलित सोशल मूवमेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक हैव आल्सो नॉट प्रमोटेड कन्वर्जेंस टू बुद्धिज्म. ठीक है. तो यहाँ पे today we could see that theoretically the neo Buddhist movement is seen as an ideological and intellectual challenge to dominant social and political ideas of the ruling elites. तो उनको टैप करने के लिए ये neo Buddhist डायरेक्टली फॉर्म किया गया था by B.R. Ambedkar साहब. And he was very much appropriated with this terminology, with this ideology which he have derived from Lord Buddha. ठीक है. तो अभी ये थोड़ा बहुत न्यूज में है. ओके. क्योंकि अभी हम लोग ने रिसेंटली हम लोग देखे भी थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूपी में दिस जो मैंने एयरपोर्ट का नाम बोला था आपको, तो वो एयरपोर्ट डायरेक्टली वहां पे उन्होंने एक ये में टू कनेक्ट सम ऑफ द रिलीजियस साइट जो मैंने बोला था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो वो भी क्यों? इट्स डायरेक्टली टू कनेक्ट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स. तो जितने भी पिलग्रिमेज साइट्स है बुद्धिस्ट का सब यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे. तो इसीलिए न्यू बुद्धिस्ट का कल्चर अभी भी हम लोग का यहाँ पे प्रेवलेंट है. ठीक है. इनका थोड़ा ड्रॉबैक्स भी है. क्यों? ऐसा नहीं है कि जो न्यू बुद्धिस्ट है ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था. इट ऑल्सो फेल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ दिस मैन दैट इज दिस अम्बेडकर साहब. ठीक है. एंड इन रिसेंट टाइम्स Neo Buddhism has generated a passive community exclusively that often engages with ritualistic and spiritual endeavors rather than building impressive struggles for social justice or to gain political power. तो यहाँ पे अभी न्यू बुद्धिस्ट क्या हो गया? एक पासिव सा हो गया, एक्टिव नहीं रहा वो. ओके. एंड इट एंगेजेस इन रिचुअल्स में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं. स्पिरिचुअल एंडियवर्स, आत्मा में ज्यादा विश्वास करते हैं. तो अभी यहाँ पे थोड़ा लैकनेस आ गया. लेकिन एक टाइम में वी कुड सी दैट न्यू बुद्धिस्ट हैज डायरेक्टली रिवोल्यूशनाइज्ड दिस दलित्स स्ट्रगलिंग फॉर देयर रिस्पेक्टिव राइट्स. So we could see in a conclusion that this revolutionary promises made during Ambedkar's historical Buddhist conversion would be only fulfilled if the polity is very much sensitive towards secularism and social justice. Though it is very much vital to protect the autonomous cultural space to the new Buddhists, we could equally be very much making important to build a unified people's movement to protect the merits of India's constitutional democracy.
And it is only by initiating democratic dialogue only that we could see that the marginalized and the struggling communities, which was a transformative project made by Ambedkar, can only be reformed through some of the measures taken up by the polity. तो यहाँ पे उन्हीं के ऊपर यहाँ पे एक डिस्कस किया गया था हरीश एस वानखाड़े जी के द्वारा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है इन सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज जेएनयू न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे एक एनालिसिस किया गया है अबाउट दिस न्यू बुद्धिस्ट व्हिच वाज इनिशिएटेड बाय बी आर अम्बेडकर साहब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1950s। ओके, जब उन्होंने देखा कि दिस पीपल हु आर डाउन ट्रोडन पीपल, अनटचेबल पीपल्स, दे आर वेरी मच इनह्यूमनली ट्रीटेड बाय द अपर कास्ट पीपल। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस अबाउट द एडिटोरियल। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव गॉट अ 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, so you could please attempt this and make down in the comment sections. Also, you will get the answers with the free Telegram group that has got the link below. Okay, so do join our WhatsApp as well as Telegram group for further updates. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.